Hello guys, I am Pramod Kumar and today we are going to discuss a very interesting topic. According to recent research, ozone hole is found in lower stratosphere over the tropics. We all know that ozone hole is found in Antarctic region, but according to recent research, it is also found in tropical areas also. ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो कि सन से आते हैं उनसे सेव करती है. नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज. A professor at the University of Waterloo in Canada, King Bill Lu, claimed that there is a large ozone hole in lower stratosphere over the tropics and has been there since the 1980s. Tropics cover 50% of the world population. It means this ozone hole will directly impact the 50% of the world population. And this hole is 7 times bigger than the Antarctica ozone hole, and it is present all year round, unlike the Antarctica ozone hole that emerges during only spring. जो अंटार्कटिका वाला ओजोन होल है वो केवल स्प्रिंग में हमें दिखाई देता है, लेकिन ये वाला जो ओजोन होल है जो कि ट्रॉपिक्स पे है वो पूरी साल भर हमें दिखाई देगा. द साइंटिस्ट वार्नड दैट दिस न्यूली डिस्कवर्ड होल कुड हैव डिजास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ. लेकिन एक दूसरे रिसर्चर डॉक्टर मार्टा आइबोलस अल्वरेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ऑफ द अर्थ एंड एस्ट्रोफिजिक्स एट द कॉम्प्यूटेस यूनिवर्सिटी एट मेड सेड दैट in his opinion, the article lacks the scientific rigor necessary to be a reliable contribution, and according to him, ozone depletion is nothing new and is merely due to the acceleration of renewable adoption or circulation. And he says the journal in which it is published has a very low impact factor. Now, so here we can say that a lot of research needs to be done before coming on any conclusion. Now let us see what are the causes that are depleting the ozone layer. There are many chemicals like chlorine, bromine, chlorofluorocarbons, halogens, and carbon tetrachloride. And depletion of ozone layer can lead to increased UV radiation, which can increase risk of skin cancer, weaken human immune systems, decrease agricultural productivity, and negatively affect aquatic organisms and ecosystems. बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि वियना कन्वेंशन. इट फॉर्मलाइज्ड international cooperation and this resulted in signing of Montreal Protocol. Montreal Protocol 1987 में साइन किया गया. It was to phase out ozone depleting substance like CFCs, chlorofluorocarbons, और इसने CFCs को HFC से रिप्लेस कर दिया. तो इंडस्ट्रीज़ ने अपने रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनिंग में HFC को यूज करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन HFC ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, होती ग्लोबल वार्मिंग की. तो HFC को फेज डाउन करने के लिए फिर से एक एग्रीमेंट हुआ, किगाली एग्रीमेंट. तो किगाली एग्रीमेंट वाज adopted in 2016 to phase down hydrofluorocarbon and countries are working on it. You can follow me for latest updates. My Instagram ID is officialprabodh.insta and also on YouTube. Thank you.